थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हमारा टॉपिक है आज का। इसमें हम बात करेंगे अबाउट द इंटरनल एनर्जी। उसी बेटे के व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी। आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई करते हैं तो व्हाट हैपन टू इट। इसकी बेटे एक तो बढ़ जाती है वाइब्रेशन, यानी इनकी बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी। सेकेंडली, पार्टिकल्स के दरमियान गैप बढ़ता है। क्या बढ़ता है जी? गैप। तो उससे उनकी बढ़ती है पोटेंशियल एनर्जी, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। राइट। तो अब वो कहता है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज on supplying heat if atom molecule move faster, उनकी बढ़ती है kinetic energy. If their mean separation increase because they have gained energy to break free of their neighboring, तो इससे क्या बढ़ जाएगी? इनकी पोटेंशियल एनर्जी। आप जब कन्वर्ट करते हैं सॉलिड को लिक्विड में ऑन प्रोवाइडिंग हीट, इसकी बढ़ जाती है इंटरनल एनर्जी। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इन ऑल ऑफ दिस वे। In the same way, when you convert liquid to gaseous state, again इसकी internal energy बढ़ जाती है। Now, how can we define the internal energy? इसकी simple सी definition है, internal energy is sum of kinetic energy and potential energy of all particles of substance. It's sometimes called microscopic sum of kinetic energy and potential energy of all particles of substance. Rise of temperature in terms of increase in energy. टेम्परेचर की एक और भी डेफिनेशन है कि measure of average kinetic energy of all the particle of substance. Internal energy is the microscopic sum of kinetic energy and potential energy of all the particle of substance. So when temperature rises, kinetic energy of particle is increased, thus internal energy is increased. It's a way to define the increase of temperature की आगे definition. As I told you, temperature can be defined as measure of average kinetic energy of all particle of substance. Heat capacity. How can we define heat capacity? आप जानते हैं बेटे कि अगर आप किसी मेटल के ऑब्जेक्ट को आजकल सर्दी के मौसम में टच करें तो यू फील इट मोर कूल एज कम्पेयर टू वुड। क्योंकि मेटल की हीट कैपेसिटी कम है, आपकी बॉडी से हीट को क्विकली अब्सॉर्ब करता है। ऐसे शदीद गर्मी के मौसम में अगर आप किसी मेटल के बैठ जाएं बेंच के ऊपर तो तबीयत सेट हो जाती है। उसकी हीट कैपेसिटी कम है ना, वो क्विकली आपको हीट प्रोवाइड करता है। अगर वुडन बेंच है तो वो उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, वो आपको हीट आहिस्ता आहिस्ता प्रोवाइड करेगा, इसलिए आपको इतना ज्यादा गर्म फील वो नहीं होगा। हाउ कैन वी डिफाइन हीट कैपेसिटी? फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी डिफाइन हीट कैपेसिटी। E इक्वल सी डेल्टा थीटा। दिस इंप्लाइज दैट C इक्वल E over delta theta. So energy provided per unit degree rise of temperature. Heat capacity, heat provided per unit rise of temperature of body. Now unit of energy E is joule, unit of temperature is Kelvin, तो joule per Kelvin or even joule per centigrade is the unit for the heat capacity. Okay जी। हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मैस। आप जानते हैं बेटे एक कप चाय जल्दी बन जाएगी, 5 कप चाय देर से बनेगी, क्योंकि उनकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। स्मॉलर द मैस स्मॉलर द हीट कैपेसिटी। छोटे बच्चों को ठंड जल्दी लगती है क्योंकि उनका मैस कम है, वो जल्दी हीट बॉडी की लूज करते हैं। ग्रेटर इज द मैस ऑफ द सब्सटेंस, ग्रेटर इज द हीट कैपेसिटी। 10 kg of iron block has 10 times heat capacity than that of 1 kg of iron. जितने टाइम मैस बढ़ा है उतने टाइम उसकी हीट कैपेसिटी बढ़ गई। देन वी हैव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक का मीनिंग होता है पर यूनिट मैस। इसका मीनिंग क्या है जी? पर यूनिट मैस। तो अब हम इसकी डिफाइन करेंगे इस फॉर्मूला से। E इक्वल समटाइम कभी इसे क्यू भी कह देते हैं, एम सी डेल्टा थीटा। इसको एम सी डेल्टा टी भी कहते हैं तो एग्जामिनर इतराज नहीं करता। अब देखिए यहाँ जो C है ना, स्मॉल c, इट इज इक्वल E ओवर एम डेल्टा टी। अब यहां से इसको डिफाइन करेंगे आप लोग। E के आगे हीट एनर्जी, एम मैस, डेल्टा टी राइज ऑफ टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड पर यूनिट मैस पर यूनिट डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी डिफाइन एज एनर्जी रिक्वायर्ड per unit mass per unit
सारे लफ्ज बोल दें डिग्री। टेम्परेचर इंक्रीज, amount of energy provided per unit mass per unit degree rise of temperature जी। heat capacity is equal to mc delta theta, c equal e over m delta t, यूनिट क्या बनेगा इसका, जूल पर केजी केल्विन। ओके जी, इट्स फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाउ वी सी फ्यू प्रॉब्लम्स अबाउट इट। पहले हम देखते हैं कुछ इजी प्रॉब्लम, फिर हम आते हैं टुवर्ड्स मोर टेक्निकल प्रॉब्लम जी। फर्स्ट क्वेश्चन, if 3000 joule of energy is supplied to a mass of 2 kg, temperature increase from 10 to 35, find the specific heat capacity, Q equal mc delta theta, 30,000 is energy provided, mass is 2, c is to find out, delta theta change of temperature 35 minus 10 ये बन जाएगा 25, तो 30,000 equal to into c into 50, sorry, it is 35 minus 10 mean 25, it is 25. Now we have c equal 30,000 divided by 2 into 25, तो ये बेटा उसका मिल जाएगा आंसर 600 जूल पर केजी केल्विन। ओके जी, how much energy must be supplied, what to find energy of mass 2 kg of material of specific heat capacity 500 joule per kg Kelvin, rise of temperature 10 सेंटीग्रेड। ये बेटे टेम्परेचर राइज डेल्टा थीटा है हमारे पास, ये हमारे पास मैस आ गया। ओके जी, तो Q इक्वल एम सी डेल्टा थीटा, mass is 5 kg, you see, c is 500, delta theta simply 10, rise of temperature या drop of temperature, तो 5 into 5 25, तो 25,000 जूल एनर्जी बेटे हम प्रोवाइड की। नेक्स्ट जी, कुछ क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल देखते हैं हम लोग, जरा लेवल ऑफ डिफिकल्टी और हाई है। एंड इलेक्ट्रिक केटल ऑफ रेटेड 5 watt containing 2 kg of water switched on if specific heat capacity is 4200 joule of water, estimate the time taken for water temperature to rise from 30 to 1000। अब आपने ये बात याद रखनी है कि वी हैव द फॉर्मूला, यू नो व्हाट्स पावर, पावर इक्वल टू energy over time, work over time, any type of energy over time, heat energy over time. This thing provides us Q is equal to power into time. Okay. Now we also have Q is equal to mc delta theta. So Q is equal to PT. PT equal mc delta theta. Now in the given data, what's power? 5 kilowatt. If you don't mind, we write it 5,000. Okay. Kilowatt है ना? Time we need to find out. They are asking estimate time. We have to estimate time, how much time will it take. Okay ji. What's mass? Mass given to us 2 kg. So mass here is 2 kg equal to C provided to us 4200. ये आपको नजर आ रहा C 4200 4200 and delta theta 3200 कितना आ जाएगा जी 70। So 100 minus 30 कर लें, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो ये 2 into 4200 into 70 equal to 1000 into t। ये बेटे 50k है ना, चेक कर लें, नहीं बेटे 5k है, अभी जीरो होने लगा था, इट्स 5k तो उसको हम बोल देंगे 5000, राइट, एक जीरो कम कर दें आप। नो जी, वी हैव t इक्वल 2 into 4200 into 70 divided by 5000। ओके जी, इट्स आंसर इज नो 2100 सेकंड। t इक्वल, ये देखें बेटे आप, 2 into 4200, 2 multiplied by 4200
multiply by 70. This divided by 5000. 117.6 सेकंड। ओके जी। नेक्स्ट, तो पीटी इज इक्वल टू एमसी डेल्टा थीटा, आपने क्यू को इससे कन्वर्ट कर लिया। सेम फॉर्मूला यहाँ पे आएगा हमारे पास, मेरा ख्याल है। अ टैंक होल्डिंग 50 kg ऑफ वाटर इज हीटेड बाय अ 5 के वॉट। सेम आ गया, हीटर ले लिया उन्होंने, इमर्शन हीटर। If the specific heat capacity is 4200 joule per kg per Kelvin, estimate time taken. Again, we need to find time, but here rise of temperature is 10 to 60, 50 centigrade temperature rise. Same formula, Q equal mc delta theta. Q is equal to Pt equal mc delta theta. And power is now, you see, we have here 5000, 5 kV है ना, into time. Mass here is what? 50. C is 200. Delta theta 60 minus 10, 50 कर लेते हैं, एक स्टेप शॉर्ट कर लेते हैं। तो व्हाट इज टाइम नो? इन दिस केस आपने बेटे ने करना है मल्टीप्लाई। जो आपका आंसर है उसको डिवाइड कर देंगे 500 पे, तो बेटे आपका आंसर आपको मिल जाएगा 2100 सेकेंड। ओके जी। तो बेटे ये आपने इस तरीके से क्वेश्चंस को देखना है आप लोगों ने। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाउ मच थर्मल एनर्जी इज नीडेड टू राइज टेम्परेचर बाय 10 सेंटीग्रेड ऑफ 5 kg ऑफ सब्सटेंस। आपको उसकी दे रहे हैं हीट कैपेसिटी, एनर्जी फाइंड करनी है। Q इक्वल एम सी डेल्टा थीटा, mass is 5 kg, C is 300, okay, it is C, and change of temperature is 10. So 3 into 5, 15, and 30. This much joule of energy provided to rise this temperature to this much value. Now he's saying if the object have higher heat capacity, पानी की बहुत ज्यादा होती है हीट कैपेसिटी 4200, it can store large amount of energy when it's heated up, and it give out large amount of heat when it cools down. It heats up or cools down slower than other substance. आप पानी गर्म करते हैं कंटेनर में, तो बर्तन जल्दी गर्म हो जाता है, पानी देर से गर्म होता है, इसलिए कि पानी की हीट कैपेसिटी ज्यादा है। एक्सपेरिमेंट टू फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड जी, ये वीडियो आपने फाइंड करनी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, वो चेंज द पेन जो इस पे लिख सके। ये आपको करंट दिया हुआ है, इसमें आपको वोल्टेज दिया है, पैरेलल में लगाया आपने वोल्टेज किसके? इस हीटर के। ओके जी। और अब आप देखते हैं कि हाउ डज इट वर्क। तो बेटे यहाँ से करंट मिल गया हमें, यहाँ से मिल गया वोल्टेज। आपने प्लेस करेंगे इसके पैरेलल स्टॉप वॉच। ओके जी। और उस स्टॉप वॉच से आपने नोट करना है टाइम कितना आपको मिलता है। यहाँ से ये स्टॉप वॉच का डिजाइन पसंद ना है कोई बात नहीं, यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक, ओके। Thermometer will give you the rise of temperature. You have the temperature initial theta 1, you have the final temperature theta 2, and keep in mind you have taken the mass of water before supplying it heat. Mass is also being measured. Then we use formula Q equal mc delta theta. As I told you previously, the most important thing is the diagram here, and you say set the apparatus as shown in figure, right? Made the current when it becomes stable, measure voltage, measure initial temperature, measure final temperature in the given time interval t, and before that find the mass as well. Now you know what's power? Power equal to heat energy over time, and energy equal to power into time, and in power is also equal to IV टी। जो बच्चे ओवन वाले हैं, IG1 वाले हैं, उनको जरा फॉर्मूला बाद में पता चलेगा। ये बड़े फॉर्मूला हमारे पास है हीट के लिए। पावर का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिसिटी में P इज इक्वल टू IV। आपको करंट मालूम है, आपको वोल्टेज मालूम है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर। ओके जी। नो Q इज इक्वल टू IVT, सो IVT इक्वल MC डेल्टा थीटा, MC डेल्टा थीटा,
and C here equal I V T over M delta theta. आपको delta theta, mass, current, value of voltage, value of time. You can find the value of C. Okay जी, यहाँ हमने ignore किया heat loss to surrounding and in the circuit as well. The same experiment for the solid, the same method, same technology. Okay ji, here we have the again current, here we have the again voltage. The solid में we have the thermometer, right? Final temperature theta 1, theta 2. हमने इसका mass लिया, initial mass m. We again use same formula IVT equal mc delta theta, then C equal IVT over m delta theta. तो इस फॉर्मूले से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड. ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला अहम हो गया हमारे पास. आई वी टी इक्वल एम सी डेल्टा थीटा, और उससे पहले एक और फॉर्मूला पावर इनटू टाइम. ओके, जो हमने यूज किया अभी इन द अबव प्रॉब्लम्स. Melting. How can we define melting? Conversion of liquid to gaseous state, sorry, conversion of solid to liquid at fixed temperature is called melting. Solid heated, it change its state to liquid. The process is called melting. Solidification, a solid melts at certain temperature known as melting, और जो उसका रिवर्स है वो हो जाएगा solidification. Okay जी, heat is absorbed when solid melt. Okay जी, but temperature remain constant because that heat used to break the intermolecular forces. Okay जी. Factor affecting melting. Impurities, impure water will have lower melting point. It does not 0 centigrade, it will be below 0 centigrade. Increase in external pressure. Okay, it will also lower the melting point. Boiling. Change of liquid to gaseous state at constant temperature. It is the condition fixed temperature. Okay, at standard atmospheric pressure, this temperature is called the boiling point. Okay, this temperature is called boiling point. Energy transfer without temperature change. Why temperature does not change while change of state? When liquid boil, the heat supplied to the liquid does not cause any rise in temperature. What it does? Heat energy is used by the liquid of molecule to overcome the intermolecular forces. It overcomes the intermolecular forces and hence escape from the liquid surface to change the state. Factor affecting boiling, its reverse. Impurities increase the boiling point. Okay, ji? And if you increase the pressure, reducing the pressure, lower the boiling point, and increase of pressure, increase the boiling point. As you know, in the pressure cooker, we have higher value of pressure. Okay, ji? And in the cooker, ये इसका हैंडल बना लेते हैं बेटे. When you provide it heat, इसमें liquid जब evaporate होता है तो इसकी layer बनती है यहाँ पर. They generate the artificial pressure and water may boil here at 110 centigrade. तो boiling point raise करता है. That's why cooking of food become quick in the pressure cooker. Evaporation. Conversion of liquid to gaseous state at any temperature. यहाँ fixed temperature नहीं है. Any temperature is called evaporation. This phenomena always remain continue, and evaporation, produce cooling because high energy molecule leave the liquid surface. Kinetic theory of evaporation. Molecule of liquid have an average kinetic energy which increase with the temperature. Molecule near the surface which happen to be moving faster than average can escape from the attraction of the neighboring molecules and escape out. Some of these may collide with other molecules above the liquid and so bounce back, but maximum may escape, but many other molecules may escape. And as I told you, during this phenomena, energy net is decreased. Evaporation produces cooling effect as latent heat retained by evaporation is absorbed from the surrounding molecule से ये absorb होती है.
अगर अपने हाथ पे आप परफ्यूम लगाएं और उसको हवा एयर में प्लेस करें या ब्लो करें एयर, तो यू फील मोर कूल, क्योंकि परफ्यूम क्विकली इवेपोरेट होता है और हमें कूलिंग का इफेक्ट मिलता है। व्हेन स्वेट इवेपोरेट्स हीट इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी, दस बॉडी इज कूल्ड। अल्लाह पाक का ये कूलिंग का मैकेनिज्म है बॉडी का गर्मी के मौसम में। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, हाउ, सरफेस एरिया। बेटे एक गिलास पानी में बहुत देर तक पानी इवेपोरेट होता रहेगा, लेकिन स्लो होगा इवेपोरेट। वही पानी फेंक दें फ्लोर के ऊपर, राइट, जब पानी फ्लोर पे फेंकेंगे तो वो क्विकली इवेपोरेट होगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो एक्सपोज हो गया एयर को वो बढ़ जाएगा। टेम्परेचर हाई है तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। गर्मियों में कपड़े जल्दी खुश्क होते हैं, सर्दियों में देर से खुश्क होते हैं। हाई टेम्परेचर पे इवेपोरेशन बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी, बरसात के मौसम में जुलाई अगस्त में वी फील मोर हीट इफेक्ट। वाई? बिकॉज हमारी बॉडी का जो स्वेट है वो इवेपोरेट नहीं कर पाता, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी ह्यूमिडिटी इज इन द एयर। सो ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। और अगर ब्रीज ब्लो कर रही है, हवा चल रही है, तो बेटे इवेपोरेशन का रेट भी क्विक हो जाएगा। ठीक है। डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, नो फ्यू डिफरेंस यू नीड टू कीप इन माइंड। नंबर वन, बॉइलिंग अकर एट फिक्स टेम्परेचर, and evaporation can occur at any temperature. Boiling is a quick process, evaporation is a slow process. Boiling occurs throughout the liquid, whereas evaporation is only a surface phenomena, so it occurs only at the surface. Bubbles are produced during boiling, no bubbles produced during evaporation. Temperature remain constant during boiling. When water change to steam at 100 centigrade, remain temperature fixed. But temperature decrease during evaporation because high energy molecule leave the liquid surface. Heat energy source used for boiling, but for evaporation, heat from sounding is being taken. Latent heat of fusion. You see here, solid change to liquid state. Okay, this is the heat of fusion. Amount of energy given to solid at its melting point to change to liquid. It is called fusion. In the same way, reverse process. If liquid change to solid, the amount of heat is same. No temperature change because the energy used to break the intermolecular forces. As solid is melting, all the energy supplied to it completely used for the breaking strong forces between the molecules. Only potential energy of the molecule increase. Therefore, temperature of the solid does not rise because the kinetic energy does not change. Same phenomena happen when a liquid change to gaseous state. If you change a liquid to gaseous state, right, इसको बेटे आप कन्वर्ट कर दिया gaseous state में, तो in this case again the same thing happen. Latent heat is being provided. That's called latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization. Okay.